Hello, friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. So, today we will be covering our geomorphology. It is a very comprehensive topic and it will take at least, I think, 3 to 4 class to complete. In the previous section, we have covered some of the basics of the plate tectonics theory, that is the forces that are happening inside the earth. तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, then we will in short revise the previous classes. The earth's movement and why there is a movement in earth, because of the sun. So sun is the main source of energy for everything that is happening on the earth. So earth movement can be divided into two forces, endogenic, इसको बाद में कवर करेंगे. Then in the endogenic we have the catastrophic and diastrophic forces. The catastrophic we have already studied. Catastrophic means that is happened very quickly in a just a snap, जैसे थैनोस ने चुटकी बजाई थी वो वाला. So we have covered this volcanoes. We have not covered volcanoes, but the other aspect we have covered earthquakes. Volcanoes हम cover कर लेंगे. In the diastrophic, again it has been bifurcated into two. The first one is the orogenic forces. Orogenic forces are the mountain building forces, just like we have studied in previous class in the continent convergence, that is the formation of Himalayas. And apereogenic is the continent building. Orogenic is the mountain building force, apereogenic is the continent building force. And continent building can happen in two ways: emergence of land as well as submergence of land. For the additional information, submergence of land with respect to India, which coast is submerged coast? Yes, the west coast, the some part of Kerala as well as some part of Gujarat is the submerged coast, and rest of the coast is the emergent coast. So the west coast, Kerala as well as Gujarat, is the submerged coast. Then we have exogenic forces. Exogenic means that is happening exterior to the earth. It means on the earth's crust. This is happening inside the earth. This is happening on the surface. So exogenic can be divided into two, and we will study it in detail: weathering and erosion. As you can see, weathering and erosion, these two terms you are familiar with. It means exogenic forces are also known as destructive forces, and this is constructive because there is a construction happening here: mountain building, continent building. Here also we are building some landforms. In the case of volcanoes, mountains are building. So this is our whole classification regarding geomorphology. In the previous classes, let's revise. In the previous class we have covered the three subtopics of plate tectonics theory. What is the plate? It is a solid lithospheric slab. We have the 7 major plates: the Eurasian plate, the Pacific plate, North America, South America, Africa, Indo-Australia and Antarctica. Then we have some minor plates. I have told you Juan de Fuca, बीच में Cocos plate, नीचे हमारी Nazca plate. Then we have the Arabian plate, we have the Philippines plate, we have the Burmese plate. So these are the number of minor plates. The three subtypes we have studied is the
First of all, the convergent plate boundary, the second one is the divergent plate boundary, and the third one is the transform plate boundary. In the convergent plate boundary, again there are three subheads. The first is continent convergence. We have studied the formation of Himalayas. There is no subduction, but there is a abduction taking place beneath the Himalayas, hence no earthquake, because there is nothing subducting below a plate. So there is no volcanoes. In the previous class I have forgot to tell you, there are no volcanoes in Himalayas. So the only reason that we can't experience volcanism in Himalayas is there is no subduction, as there is a continent convergence. But yes, there is immense vulnerable sections of earthquake. Then we have studied the कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस. उसमें हमने कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, उसमें हमने क्या पढ़ा? कॉन्टिनेंट इज वाइडर प्लेट, ओशनिक इज मोर डेंस, सो मोर डेंस विल सबडक्ट, ओशनिक प्लेट विल सबडक्ट बिलो द कॉन्टिनेंट प्लेट, हेंस having some resultant landforms like the first of all the mountains. Whenever there is a convergent plate boundary, there is a wrapping of mountains or folding of the rocks leading to the mountains. So there is a mountains in ocean continent convergence. Mountain form हो गए. Now there is a subduction. It means the plate particles, the oceanic plate particles will turn into molten magma and emerge again. So there is a destructive or explosive volcanoes happening. Third is the Benioff zone. Because there is a subduction, so there is a Benioff zone or the trenches formation. These are number of things, and the layer of formation of the mountains is known as cordillera. तो ये भी आप देख सकते हैं आपके एटलस में. इफ़ यू सी द रॉकीज एंड एंडीज, सो रॉकीज में कॉर्डिलेरा लिखा हुआ, तो वो भी आप देख सकते हैं. So the Pacific plate is submerging from all the sides. Thus in this part we have the North American plate as well as Juan de Fuca plate. So Pacific plate is submerging below, hence we have some of the we have the ring of fire. Then we have the South American plate as well as the Nazca plate. Pacific plate is subducting below these plates and hence again forming the ring of fire. Also there is a Peru or Chile trench here. There is a California trench in the west part of North America. Then here again Pacific ring of fire. You tend to memorize the world map जो भी मैं बनाता हूँ हमेशा. So यहाँ से वापस ring of fire आती है and Australia is not part of ring of fire. So यहाँ वापस आती है. इधर we have the Eurasian plate, we have the Japanese plate, we have the Philippines plate and we have the Burmese plate अंदर हो जाएगी. So these are the some minor plates and these are the Indian, Australian plate and the Eurasian plate. So Pacific plate is subducting below all these plates, hence forming the Pacific ring of fires. Pacific ring of fires contains more than 60% of volcanoes of all around the world. Yet again we have some of the major resultant landforms like the trenches. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रियूकू ट्रेंच, सबसे ऊपर आता है. उसके बाद मिंदानो ट्रेंच है, उसके नीचे मैरियन ट्रेंच, द डीपेस्ट ट्रेंच, एंड नीचे हमारे पास इंडियन ओशन में जावा या सुंडा ट्रेंच आता है. सो दीज आर सम ऑफ द रिजल्टेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस. अच्छा, रॉकीज, एंडीज एंड एल्प्स ये भी रिजल्टेंट है, मैंने बता दिया है. एल्प्स को क्या बोलते हैं? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी बोला जाता है. एंड वी हैव सम ऑफ द वॉल्केनिज्म ओवर देयर ऑल्सो. इटली माउंटेन्स, एटना, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली एंड वोल्केनो. हेयर वी हैव नॉर्थ अमेरिका, माउंट शास्ता, माउंट हुड, माउंट कुक इन न्यूजीलैंड, देन माउंट कोटोपैक्सी इन इक्वाडोर, माउंट अकानगुआ इन, मैंने बोलता था क्या ना, शायद से पेरू है, देख लेना एक बार. So these are the continent ocean convergence. Now we have the oceanic convergence. Again convergent plate boundary, someone is subducting, so एक ही subduct हो जाएगा. Then whenever there is a convergence we have the mountain building, so there is a submerged mountains. Then something is subducting, then again the particles will get converted into molten magma and will re-emerge, but there is a ocean floor over there, so it is not that much of explosive volcano, but there is a formation of island arcs and festoons. So
numerous island arcs, such as the Caribbean island arc. The islands are also known as Greater Antilles. The second is the Japanese island arc. मैंने बताया था कल islands भी Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu. Then I have also told you number of chain of islands like Aleutian Island. Then we have the Kuril Island and then we have the Ryukyu Island. तो ऐसे आप याद कर लेना. देन वी हैव इंडोनेशियन आइलैंड आर्क एंड द फिलीपींस आइलैंड आर्क. तो शायद से मैंने कल फिलीपींस छोड़ दिया था. फिलीपींस आइलैंड आर्क, इंडोनेशियन आइलैंड आर्क, जापानीज आइलैंड आर्क एंड कैरिबियन आइलैंड आर्क. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओशन कन्वर्जेंस. सो ये था हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. आई हैव कवर्ड, नहीं, आई हैव नॉट कवर्ड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ना. इन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रिजेस. सो मिड ओशनिक रिजेस है तो वहाँ क्या आएगा, कुछ आइलैंड्स हम देख पाएंगे. देन वी विल एक्सपीरियंस सम अर्थक्वेक ओवर देयर. अंडरस्टूड. सो दीज आर सम ऑफ द रिजल्टेंट्स ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. रिफ्ट वैली सबसे मेन क्या था हमारा, रिफ्ट वैली था जो मैंने बताया था, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली. देन वी हैव द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज. ओनली वन थिंग, दैट the plates are drifting on the surface of one another and not subducting. So there's a example of the Californian ridge trench. क्या था वो, देख लेना आप. ड्रिफ्टिंग, तो कैलिफोर्निया में जो भी ड्रिफ्टिंग हो रही है, फॉल्टिंग हो रही है, वो इसकी वजह से हो रही है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की वजह से. सो ये था हमारा पिछले क्लास का थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन. आज हम कवर करने वाले हैं, क्या कवर करें, चलो ओरोजेनी कवर करते हैं. एंड ओरोजेनी वी विल कवर टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज फॉल्टिंग एंड द सेकेंड वन इज फोल्डिंग. सो वाया दीज टू टाइप्स वी हैव द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग. आई एम रबिंग दिस, प्लीज ऑब्जर्व दिस. So first of all we will cover the folding part. Some of the things that are important. The forces are compressive in nature. The rocks are elastic in nature. There is a up wrapping or down wrapping happening. These are the main components of folding. There is a compressional force over here, so up wrapped and down wrapped. This is anticlinal mountains. So wherever you will see the word anticlinal, it means there is a mountain, and this is the synclinal valley. So this is known as folding. Happens in elastic rocks because there is no faulting. Faulting happens in the hard rocks. So rocks are elastic in nature. We have the compressive forces, and there is a upwrapping of downwrapping, and the resultant is the anticlinal mountains and synclinal valleys. Now there are various kind of folds that are given in our syllabus. वो आप एक बार गूगल पे जाके टाइप कर दीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स. यू विल सी सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड, देन monoclinal, isoclinal, recumbent या overthrust fold, and the nappe. So nappe is very much important. Please go and see over there. The next thing we will cover is the faulting. Faulting में we have basically tensional force. It is more of the tensional force, but there are some instances of compressive forces also, but this happens in the hard rocks, and faulting happens along the zones or lines of weaknesses. In the layman language we call it cracks. So there is a displacement, vertical displacement.
here the trapping and non trapping, here there's a displacement. थोड़े से डायग्राम्स बना देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डायग्राम्स ऑफ द नॉर्मल फॉल्ट. नॉर्मल फॉल्ट किस में होगा? टेंशन में. वी हैव द नॉर्मल फॉल्ट. डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतने सिंप्लीफाइड डायग्राम्स, क्योंकि कोर्स ही इतना गजब है. तो चलो नॉर्मल फॉल्ट बना देते हैं. टेंशनल फोर्स लग रहा है ना, ठीक है. So this is the diagram of normal fault. Tensional force लग रहा है. So there's a vertical displacement. This is known as host and this is known as graben. So graben are valleys, rift valleys, and host is the block mountains. So this is the formation of block mountains and the rift valleys. कहाँ हो रहा है ये? आपने देखा है वॉस्जेस माउंटेन्स ऑफ फ्रांस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी, उसके बीच में एक नदी बह रही है रिफ्ट वैली में. दैट इज नोन एज राइन रिवर. इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू दिस. द राइन रिवर इज फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली क्रिएटेड बाय द वॉस्जेस फॉरेस्ट ऑफ द फ्रांस एंड द ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ द जर्मनी. दिस Rhine river will drain into the North Sea. Open your atlas and see it. In the vicinity of the origination of Rhine river, yet another river flows in the southward direction. So one river is flowing in the north direction and draining into North Sea. That is our Rhine river. One side is Vosges mountain, another side is the Black Forest mountains. Another river is flowing in southward direction and joining the Mediterranean Sea. Which river is that river? Rhone river, Rhone. So sister rivers है Rhone river, and Rhone river has the relation with the Mistral wind. तो cold wind एक हम बाद में पढ़ेंगे, Mistral याद रखना, that is related with the Rhone river. This is the normal fault happened due to tensional forces. Now I have said there is a specific cases of compressive forces, that is known as reverse fault. अब रिवर्स फॉल्ट है, कंप्रेशनल फोर्सेस है. यार ये थोड़ा गलत नहीं हो गया? देखना जरा. कैसे पता चला? डायग्राम से ही पता चल जाता है, ऐसा नहीं रटा हुआ है. अगर टेंशनल फोर्स है तो मतलब यहाँ और यहाँ जा रहे हैं. अगर यहाँ जा रहे हैं दोनों दो चीज़ें, तो बीच वाली ज़मीन ऊपर कोई ना हुई नीचे जाएगी ना. सो ये कहीं चली गई नीचे, ये रह गए ऊपर. एंड वी हैव द वॉस्जेस माउंटेन एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन विच आर नोन एज होस्ट एंड द ग्रेबन वैली. GRABEN, ग्रेबन वैली. रिवर्स फॉल्ट तो कंसेप्ट्स इसलिए याद होते हैं क्योंकि रेक्टिफिकेशन से ही नहीं हो सकता था, अभी गलत बन जाता है ये. रिवर्स फॉल्ट इट मीन्स कंप्रेशनल. अगर दो चीज़ कंप्रेस हो रही है तो बीच वाला ऊपर उठ जाएगा. तो अब वो वाला जो पहला वाला डायग्राम था हमारा वो बन जाएगा यहाँ. Yet again these are the graben, this is the host and this is compression reverse fault. ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हमारे इंडिया में. किधर? विंध्या सतपुरा में. विंध्या सतपुरा आपको पता है? So here continuous line for Vindhyas and 7 dots for Satpuras. The group of 7 mountains Satpura. रिफ्ट वैली में वी हैव द नर्मदा रिवर. नीचे हमारे पास है तापी रिवर. नर्मदा रिवर कहाँ से आती है? मैकाल रेंज से. ओपन योर एटलसेस, सी
at the edge of the Gujarat, we have the Gwaligarh, Mahadev, and Maikal ranges. So from the Maikal range, there is a origination. Amarkantak plateau है Maikal range. There is a origination of Narmada. तापी रिवर originates from the Multai region in मध्य प्रदेश. ये याद रखना. Yet again, one more river will originate from the Maikal range. That is the Son river, which will join the Ganga river later. यहाँ एक और रिवर थी, मैं नाम भूल गया. ये रिवर जाके भी मिलती है हुगली भागीरथी में. एंड हुगली भागीरथी इज द डिस्ट्रीब्यूटरी, नॉट ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. मुझे बताना आप कौन सी है ये. दामोदर, याद आ गई, दामोदर रिवर. सो वी हैव द नर्मदा रिवर flowing in the Rift Valley. We have the Tapi river originated from the Multai region of MP. The Son river, again Maikal range, Amarkantak plateau, and the Damodar river, which will join the Hooghly Bhagirathi, which is the distributary of the Ganges river or Ganga river. रिवर्स फॉल्ट का बता दिया मैंने, नॉर्मल फॉल्ट का बता दिया आपको. We have step like fault. The third subpart is a step fault. There's a vertical displacement in the single direction, like so there's a vertical displacement in the single direction, and this is the example of our Deccan traps. क्या होते हैं Deccan traps? I have told you the western region of the peninsular plateau. See, don't confuse among these terms. Peninsular plateau मतलब, go by the words. Peninsula means a land area covered by water along the three directions. तो इंडिया का जो नीचे वाला भाग है, this is whole of peninsular plateau. And we have in the continent convergence, we have covered the peninsular plateau has two arms. The one is the Mikhir Rengma arm and the second is the Arauli arm. So it is a part of peninsular plateau, याद रखना. So this is known as this is known as peninsular India. Now there's a plateau region, table like regions, that has been elevated to some height. So that is known as plateau. So there's a peninsular plateau, which is this. We are excluding the coast area, and which is this. Now there are various number of plateaus over here, like Rayalaseema plateau है और ये बहुत सारे हैं. Now in the Mesozoic era, when the Indian peninsular plate started drifting towards the Eurasian plate, then we have covered reunion hotspot. Over there we have the formation of basaltic lava, Deccan lava plateau. So this is the region, the western part of the peninsular plateau is the region where we have the basaltic Deccan lava plateau region. ये हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ा था. कब पढ़ा था? क्रिटेशियस पीरियड, मेसोजोइक में, क्रिटेशियस में. So this is known as Deccan traps. Deccan traps famous किसके लिए? Yes, the growth of a cash crop known as cotton. So this is all about today's class. We have covered the two, folding and faulting. ऐसा बहुत कुछ है यार बताने के लिए. There are various rift lakes formed. Rifting किसमें होती है? So there are various rift lakes that have been formed, like Lake Baikal, which lies totally in Russia, तो वो rifting से बना है. We have Lake Balkhash, that is in Kazakhstan, rifting से बना है. फिर और भी, अब ये rifting सारी चीज़ें हटा दो, बहुत सारी चीज़ें. Aral Sea, which is in between two countries, Kazakhstan and Uzbekistan. Two rivers, Amu Darya and Ser Darya, drains into Aral Sea. Aral Sea is 90 to 99% dried up. So ये एक PYQ था, prelim में क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का. Then Jordan River flows between Israel and Jordan. Jordan River drains in, ये एटलस खोल के देखते रहिए, ऐसे कोई नहीं याद होता है. Drains in the Dead Sea. Dead Sea is the second most
सैलिनियस्ट अगर कोई वर्ड होता है तो सेकंड वो सलाइन लेक इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट इज द वैन गोलू इन टर्की, तो वो था हमारा पहला। जो हमारे डेड सी है उसके बहुत सारे नाम हैं, सी ऑफ लॉट, लेक बुहारियात करके है, तो ये सब नाम है हमारे डेड सी के, तो वो भी आप एक बार रट लेना, वो तो रटने की ज़रूरत है, ठीक है। राइन एंड रोन रिवर, आई हैव टोल्ड यू, राइन रिवर इन नॉर्थ सी, ड्रेन करती है नॉर्थ सी में, रिफ्ट वैली रिवर है। रोन रिवर साउथवर्ड डायरेक्शन, मेडिटेरेनियन सी, रिलेशन विद मिस्ट्राल, कोल्ड विंड है। सो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट, इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।